the project, understanding the requirement, and write the test scenario and test cases according to the requirement. Okay, so understanding requirement is very important for the testers. And all the documentations are required, all the documentation are given. Okay, no problem. That is what, according to the use cases, we can derive the test cases. Okay, we can derive the test scenario. Okay, so ये use cases से हम test cases लिख सकते हैं. Okay, use cases से हम test cases लिख सकते हैं. So all these things are available. Okay, so this is just a banking application project. So जैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं आपको, तो इतना पूरे स्लाइड्स एक्सप्लेन नहीं करना है. ओके, सिंपल बताना है कि बैंकिंग एप्लीकेशन, कोर बैंकिंग एप्लीकेशन, मैंने इंटरनेट बैंकिंग पे वर्क किया है इंटरनेट बैंकिंग मॉड्यूल पे. सो इसमें ऐड बेनिफिशियरी कैसे करते हैं ये हमने उसके टेस्ट किया है वो मॉड्यूल. सो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, कोर बैंकिंग का एप्लीकेशन भी दे सकते हैं ये वाला. तो इसमें इस मॉड्यूल पे एडमिन मॉड्यूल है, मैनेजर मॉड्यूल है. ओके, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. इंश्योरेंस का भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम. सो जो एक्सप्लेन करना है आप वो कर सकते हो. Okay, so some of the important stages or steps are required. Okay, that is what software testing life cycle. Okay, software testing life cycle. So mostly asked question in the interview. Okay, what are the stages are available in the STLC? That is requirement, then test plan preparation. Okay, then test cases, test scenario. Okay, prepare RTM, requirement traceability matrix. Okay, test execution, defect tracking. Okay, and test executions. So these are the phases are involved in the STLC process. So they will ask you what is the STLC process. Okay, so this is what the stage what we are going to do in the requirement analysis. You know the SDLC model: analysis, redesigning, coding, and testing. Okay, the SDLC model, we are involved in the SDLC model. Requirement analyze. Okay, requirement analysis, then the test plan will be prepared. Okay, and the other thing will be prepared. Okay, so the requirement analysis, we go through all the requirement documentations to understand the expectation of the customer. That is known as requirement analysis. So in the STLC process, we go first for requirement analysis to understand the client requirement. How we'll get understand from the client requirement? We have the documentation. Okay, kindly go through the documentation and understand the requirement. So what is the expectation of the customer? Okay, then we go for the, you can say that is what requirement analysis. So in this process the tester becomes a familiar with the requirement. Okay, so we are going to familiar with the requirement, so as per the customer point of view. Okay, then test scenario are derived from the requirements. Okay, जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम टेस्ट सिनारियो आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, सो यू नो द टेस्टर इज हैविंग आल्सो द एनालिटिकल थिंकिंग. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, एनालिटिकल थिंकिंग. सो इस पे देने के बाद वो क्या हो सकता है, तो ये रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसके टेस्ट सिनेरियो क्या हो सकते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई. सो इन दिस रिक्वायरमेंट, okay, what are the possibility, okay, what to test, that is what test scenario. How to test is test cases, that is a part of STLC phase. Okay, and the most important part in the STLC, that is what, test plan preparation. Okay, who is going to involve, who is going to develop the test plan, prepare the test plan? The test lead. Okay, test lead is responsible for creating the test plan. So what are the objectives? Test plan is a document. Okay, doc, MS Word documentation. So in the test plan, that is details about how we are going to test the application. Okay, so that the plan is a document which contains the following information. That is what the objective. Okay, scope of the testing.
Okay, approach to be, which approach to be followed, schedule, okay, outputs and deliverable means outputs and deliverable means documentation, okay, risk and uh, contingency plans, okay, then estimates and roles and responsibility, okay, then testing strategy methodology, okay, again something will be there, okay, estimation rules and responsibility, okay, entry and exit criteria for the all, okay. So these are what the test plan preparation, okay. So in the test plan that contains this one: objective, scope, roles and responsibility, estimate in timing, okay, what is the risk, deliverable, schedule, everything that is prepared in the test plan, okay. After that we write the test scenario and we are going to write the test cases, okay. So test case is a set of test conditions, okay. So before the test case we prepare what test scenarios, okay. We prepare here the test, we identify here test scenarios and we prepare the test scenarios, okay. Before the test cases we prepare the test scenarios. The test case is what set of the condition with the tester users to determine whether the requirement or use case has been satisfied in the application or not, okay. It's a set of test condition. So it's a one line sentence. Test case is the one line sentence to test the condition with the tester user to determine whether the requirement or you can say the use case has been satisfied in the application or not, okay. So use case, that is requirement, okay. In agile we can say the user story. In agile process we says what user story is nothing but the requirement, okay. Product backlog is a list of user story. Product backlog are the list of user story, okay. So user story you can say, or you can say the requirement or use case. So they are derived from the test scenarios, okay. How we can derive the test cases? We derive the test cases from the test scenario. According to the test scenario you can write the test cases, okay. Test cases that is consist of what? The template, header, body and footer, okay. Header means that contains the test case name, project name, severity, okay. Then body that contain description, input, expected results, okay. Description, input, okay, actual result, okay, expected result, etc. Footer that is contains the author, reviewer and name, okay. So this is what test case document, okay. Test case document. So according to the every company have the test case, their standard format for the test case document, okay. So this is predefined templates will be there, the organization. Can see here the test scenario and test case, okay. So this is what test case document. This contain the test scenario id, okay. This is for one scenario and you are writing here the test cases id, and we can write here the various test cases, okay. Description, test case id, description, description. Then that most important thing is available, that is what actual result and expected result and actual result, okay. Then that is having header, footer, okay. This is what header, project name, everything, and having the footer also, okay. So who is created something, okay. A dependent, okay, reviewer name or author name, okay. Then who is going to review that one? So we can check here uh actual reader status, executed by, executed and comments. So here you can take here the reviewed by, okay, something here the reviewed by, review date, okay. So that can be below also available, okay. So that is dependent in the company's template. कंपनी आपको टेम्पलेट देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि टेस्ट केस आईडी, ओके, टेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट सिनेरियो आईडी,
ठीक है, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, ओके, प्री कंडीशन, टेस्ट steps, okay, test data is optional, but the test data that can be the coverable, and precondition is optional. Okay, the most experienced candidate only write only what expected result and actual result, that's it. Okay, he is not going to write everything. Okay, expected result, actual result, okay, test case, test id, that's it. Okay, after that we can write here the test data and everything. Okay, precondition also the optional. So various having the test case templates. Okay, different test case templates are available, but the important things that is covered, जो जरूरी है वो cover हो जाता है. Okay, so here sometimes you can say, okay, so the test case id, okay, test case title, okay, prerequisite, okay, we can say here prerequisite को हम बोलेंगे कि precondition you can say. Okay, this is what precondition. Okay, टेस्ट स्टेप्स क्या है. ओके, इसमें हमने क्या किया था, टेस्ट स्टेप्स. ओके, वी हैव द सेम टेस्ट स्टेप. ओके, टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट डेटा, ओके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट. ओके, तो 95-96% सेम ही रहता है, 95 to 100. ओके, 99% सेम ही रहता है. ठीक है, सो एक्चुअल रिजल्ट, एंड हियर इज द वन कॉलम दैट इज व्हाट प्रायोरिटी. So that is very important. Okay, priority and severity we will discuss later. Okay, priority and severity. So we can give there P0, P1, P2, P3. Okay, P0 is the highest. Okay, like this way. While writing the test cases, we can give the priority also. Okay, so that is dependent. Okay, so this is what the template. सिवियरिटी मतलब Severity और priority हम बाद में discuss करेंगे. ठीक है. So priority मतलब how soon you have to fix the defect, and severity मतलब that is a functional point of view. Is having the any impact of the functionality or business. Okay, if they are having the impact of the functionality बराबर work कर नहीं रही है तो हम उसको severe issue बोल सकते हैं. That is what severity. So that is what mostly asked question in the interview. Priority and severity. Functional point of view. Function is not working as per the requirement. This is severe issue. Okay, priority issue means when soon you have to fix it. आपको कब डिफेक्ट फिक्स करना है, that is priority. Okay, so this is just a templates for test case preparation. Okay, so test case consists of this one. So after preparing the test cases, also the one stage is involved, that is what RTM. We need to prepare the requirement traceability matrix. Okay, RTM you have to prepare. So the senior person and test lead also involved there. Okay, for preparing the RTM requirement traceability matrix, that is also the one document. And in this document we are going to check all the requirement are mapped with the test cases or not. Okay, that is what mapping the test cases, test scenario and test cases. Okay, mapping the test scenario with the test cases, and simply say the mapping the requirement with the test cases. Okay, so this RTM is what for the fresher as well as experienced candidate can ask the RTM. Okay, that is mostly asked question in the interview. What is RTM? So it's a requirement traceability matrix. It's a document which maps the test case with the requirement. Okay, so जो requirement है उसके हिसाब से test case यहाँ पे mapping करते हैं. Login page having the number of test cases 25. All the requirement for the login page are covered in the form of the test cases or not. So this is requirement mapping with the test cases. ठीक है, तो इसमें सारे टेस्ट केसेस कवर होने चाहिए जितने भी लॉगिन पेज पे आ रहे हैं. जैसे 24 टेस्ट केसेस है,
रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से कवर्ड हो रही कि नहीं, ओके, होम पेज पे कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, दैट इज रिक्वायरमेंट, ओके, ये कवर हुई कि नहीं वो चेक करना, दैट इज नोन एज आरटीएम. So this is what, while this is STLC process, in the STLC process it is also available, okay, we need to go for this phase. So SDLC मॉडल में जब हम जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, वैसे जितने भी फेजेस आते हैं वैसे ही STLC का एक इम्पोर्टेंट फेज है RTM, okay, that is also very important, RTM, okay, requirement traceability matrix, can make it in Excel, okay, that is RTM is the Excel document, okay. So suppose this is what requirement ID, something test scenario ID, test scenario description, validate the working of register, account functionality. Okay, so we have the here test case IDs. This is what total, how many? 27. Sometime here having the total number of test cases column. Okay, so हर कंपनी का अलग अलग रहता है, पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है हमारे टेस्ट सिनारियो और टेस्ट केसेस, ओके, जो भी रिक्वायरमेंट है मतलब टेस्ट सिनारियोज दैट इज मैपिंग विद द टेस्ट केसेस, तो सभी टेस्ट केसेस यहाँ पे आए हैं कि नहीं, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, दैट इज एक्सेल, ओके, एक्सेल फॉर्मेट, वैलिडेट द वर्किंग ऑफ लॉगिन फंक्शनलिटी, सो 23 टेस्ट cases IDs are available here, okay, so all this requirement cover in this test cases are not, okay, so we can check from here requirement traceability matrix. So this is what RTM. Check here the requirement means that scenarios that is mapping with the test cases. This is also most important question, okay, and ask in the interviews. Okay, this is one phase in the STLC process, that is what test execution. So what is mean by the execution of the test cases? That is what you are going to execute the test case, okay, by manually or automation. So test execution is done by executing the test cases against the application or product, or executing by the using an automation tool. So we can execute the test case manually as well as automation to check the requirement, okay, that is fulfilling or not. So read the description in the test steps which is given in the test cases, and also the apply the test data on the application. Okay, once executed the test cases, will get the actual result compared with the expected result. Okay, we are going to compare the result with expected result with actual result, and then fill the status of the test case whether it is pass or fail. Okay, so that is required test data and test steps. Okay, so suppose I am going to enter the valid username and password. This is my test case. Okay, what is the test steps are required? Enter the valid username and valid password. Okay, and click on the login button. So what is the precondition, prerequisite? We need to open the any browser. Okay, then enter the any URL, or we have to write here the valid URL, not any application URL. Okay, so click on the enter button. Then if you provided the test data, we have to enter that particular data, username and password. Okay, so expected results should be what? So successfully login, user able to see the SIM home page. Okay, means administrator page, SIM dashboard page. Okay, because this is the administrator logic in. And what is the actual result? So actually we are getting the same page, that is means the strategy is pass. Okay, so we can say the test case is pass. This is the result, status report. This is the status. Okay, status means how many pass, how many fail. So the test execution manually and automation tool. Okay, so read the description in the test steps which given in the test cases and apply the test data on application. Okay, so once executed test cases will get the actual result, compare the expected result with the actual, then
the fill the status of the test case, whether it is pass and fail. This is the stage involved in the STLC process. Okay, requirement analysis, test plan preparation, identification of test scenario, test cases, RTM preparation, execution of the test cases, okay, defect reporting, defect identification, defect tracking. Okay, so here is what test execution, then defect tracking. Okay, so once we get the defect, so we have to report the defect with any tool. Okay, so Jira tool we are using for defect reporting. So then we are going to check the defect whether it is fixed by the developer or not. That is known as defect tracking. So defect tracking is the process of finding the defect, okay, in application by inspection, testing, or as a feedback from customer. Okay, so we can identify or we can track the defect. Okay, defect arrays when the expected result and actual result are not same. When we can say the defect expected result और actual result हमारा difference आ रहा है, so we can say this is what defect. So defect are documented in the system investigation report, so I can say that is what SIR, system investigation report, or defect tracking tools. So how we can document the defects? So we use the Jira. Okay, defect tracking tool, we are using the Jira for reporting and tracking the defect. Okay, so also the documentation in system investigation report. So before not having the any tool, so they are using Excel. डिफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी एक्सेल सीट यूज़ किया करते थे, जो भी है जितने भी डिफेक्ट आए हैं वहाँ पे मेंटेन करते थे. ओके, सो डिफेक्ट्स आर फिक्स and the tester retest the application to ensure the full resolution of the defect. So जैसे डिफेक्ट फिक्स किए हैं डेवलपर ने, तो टेस्टर उसको रिटेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि पूरा रिजोल्यूशन हुआ कि नहीं. अगर हुआ तो हम उसको क्लोज कर देते हैं. ठीक है, और हमारी टेस्ट केस रिलीज हो जाती है फिर. So this is also very important phase in the STLC process. Then test execution report. जो अभी हमने ये टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किया है उसकी रिपोर्ट. हाउ मेनी टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, then how many test cases pass, how many test cases are failed. Okay, all executed test cases will be delivered to the client. ठीक है, जितने भी हमने टेस्ट केसेस लिखे हैं वो we have to directly send to the client. This is called the test execution report. So the test execution report includes the information like tester name, module name, build number, data of execution, and actual result and status. Okay, so this documentation is also available, that is known as report, test execution report. Okay, so already predefined sheets will be there, organization will give you. Okay, we have to maintain there. So along with there, the test cases, test plan, requirement, traceability matrix, and defect report will be delivered to the client. Okay, so what we are going to deliver to the client? Every reports. Okay, test plan, requirement, traceability matrix, okay, defect report, everything we are directly report to the client. Okay, so these are the documentations. So these are the process involved in the STLC. And now how we are going to write the test plan. Okay, how we are going to write the test plan. So the test lead is responsible for creating the test plan. So what contains in the test plan. ठीक है, टेस्ट प्लान के अंदर कंटेंट्स कैसे रहेंगे. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग द टेस्ट प्लान? टेस्ट लीड. So the test manager or test lead is assigned by the we can say the test manager or test lead, that is assigned by the test manager. Okay, shall study the approval of the SRS and prepare the test plan for the project based on the approval of PMP. ओके, जैसे हमारे पास इसके पहले हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. ओके, दैट इज क्रिएटेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड आल्सो वी हैव द सम SRS और FRS डॉक्यूमेंटेशन. ओके, सो SRS डॉक्यूमेंटेशन, तो इसको FRS की ज़रूरत नहीं रहेगी. Okay, we can refer that one, no problem. But software requirement specification is most important for writing the test plan. Test lead is responsible for writing the test plan. Okay, so entry criteria is what?
For preparing the test plan, what is the entry criteria? Okay, when you are going to enter to prepare the test plan, so that is the entry criteria. So उसके लिए हमको क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड पीएमपी. ओके, सो यहाँ पे पीएमपी का अप्रूवल होना चाहिए. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अप्रूवल होना चाहिए, साइन ऑफ होना चाहिए, एसआरएस अप्रूव्ड होना चाहिए. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अप्रूव्ड. ओके, so approved of PMP, approved of SRS, and we have the ready with the template of test plan. So the template जो है टेस्ट प्लान का वो ऑर्गेनाइजेशन ही आपको देता है. ओके, सो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर राइटिंग द टेस्ट प्लान. ओके, so this is what entry criteria for the test plan. Approved PMP, approved SRS. Okay, test plan templates. What is the exit criteria for the preparing the test plan? Exit criteria at the end. Okay, test plan should be reviewed and approved. ठीक है, from the test manager. So test plan should be reviewed and approved. ठीक है, so जब अप्रूव होता है रिव्यू होने के बाद तो ही हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल टेस्टिंग प्रोसीजर. जब तक हमारा टेस्ट प्लान रेडी नहीं होता है, अप्रूव नहीं होता है, रेडी तो जाने दीजिए, अप्रूव नहीं होता है, रिव्यू एंड अप्रूव नहीं होता है, तब तक हम स्टार्ट नहीं करते हमारी प्रोसीजर. ओके, टेस्टिंग प्रोसीजर तब तक स्टार्ट नहीं होती है. ठीक है, सो तब तक हम क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं, स्टैटिक टेक्निक्स यूज कर सकते हैं टेस्टिंग की. So once the test plan is approved, configuration controller will create a baseline for the test plan, and also he will update the same into the configuration repository. Okay, so जो भी configuration repository है सर्वर की, कंपनी की, शेयर फोल्डर, उसमें सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. ओके, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियो, एक्सेल डॉक्यूमेंटेशन, वॉट एवर जो भी है वो पूरा रेडी हो जाएंगे रिपोजिटरी. देन वी आर रेडी टू एक्सेस द टेस्ट प्लान एंड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन. ओके, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन वी कैन गो फॉर द फर्दर प्रोसेस. जो भी हमको टास्क असाइन करेंगे टेस्ट लीड वगैरह, वैसे हम टास्क प्रिपेयर करना चालू कर देंगे. ओके, so this is what entry criteria for the test plan: approved PMP, approved SRS, and test plan templates. So templates is required. Okay, so exit criteria for what? Test plan should be reviewed and approved, and once it is approved तो configuration और सब कुछ हमारा test plan baseline create होनी चाहिए, configuration होना चाहिए repository में. So they can use the server repository, anything. Okay, so the definition. Test plan contain the scope, definition. So the document describing the scope, then approach, then resources, then schedule of the testing activities. Okay, it identify the test items, what to be tested. Okay, features to be tested, testing task, what do each task, and risk requiring. Okay, contingency planning. Meditation means risk, means problem, contingency, how to overcome, mitigation, how to overcome. Okay, details of how to test the proceed, how to test will proceed. Okay, who will do the testing, what will be the tested. Okay, in how much time the test will take place. Okay, and to what quantity level the test will be performed. Okay, these all are the definitions involved in the test plan. Okay, so the test plan documentation which describe the scope. What is the scope of this documentation or testing plan? Okay, approach, testing approaches,
methodologies, manual automation, whatever, resources, tools, लोग कितने लगेंगे, tools क्या लगेंगे, okay, schedule of the testing activities according to the modules, okay, and that is what test plan is, a dynamic document, okay, this is what dynamic document, so it is changeable according to the requirement. Schedule can be the changeable, okay. Just identify the test items, okay, where we have to test, feature to be tested, the testing task, okay, who do each task, कौन कौन सा task पे work करेगा, each and every task, okay, that will be assigned, कौन कौन सा टास्क करेगा, कौन कौन सी टेस्टिंग करेगा, ओके, एंड रिस्क रिक्वायरिंग कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, ओके, क्या रिस्क आ सकती है उसको कैसे ओवरकम करेंगे, ओके, दैट इज अ प्लानिंग, डिटेल्स ऑफ हाउ द टेस्ट विल प्रोसीड, कैसे हम फ्लो करेंगे टेस्ट का, ठीक है, हु विल डू द टेस्टिंग, ओके, व्हाट विल बी द टेस्टेड, राइट, क्या टेस्ट करना है क्या नहीं टेस्ट करना है, इन हाउ मच टाइम द टेस्ट विल टेक प्लेस, ओके, एंड to what quantity level the test will be performed, okay, these all are the definition contains in the what test plan. So this is what contains in the test plan. So this is what documentation, Microsoft doc, okay, MS Office document रहेगा, ये list of chapter रहेंगे, ठीक है. So introduction, test plan, objective, scope of the documentation, testing strategy, smoke testing क्या है, sanity testing, system testing, database testing, cross browser testing, automation tool, whatever, environment requirement test, schedule, control procedure reviews, bug reviews meeting, change request, function to be tested, function not to be tested, resources and responsibility, deliverables and milestones, defect management, dependencies, person dependency, software dependency, hardware dependency, test data, and database, okay, risk, tools, documentation, what will be document, approval, entry and exit criteria for टेस्टिंग, each टेस्टिंग एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहेगा, टेस्ट सस्पेंशन, टेस्ट रिजम्पशन एंड टेस्ट कंप्लीशंस. तो अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट कंटेंट द टेस्ट प्लान, यू कैन सिंपली से द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द टेस्टिंग, okay, how we are going to test the entire application, that concerns the scope, objective, schedule, roles and responsibility, entry criteria, exit criteria, okay, everything is covered in the test plan. What are the testing strategy we are going to apply, okay, tools, okay, what kind of the testings we are going to do, what to be tested, what functionality we are going to test, everything is mentioned in the test plan. So they will ask what is test plan, do you know the test plan, okay, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे. So जितना आप बता सकते उतना आपको बताने की ज़रूरत है, जितना आपको याद रहे टेस्ट प्लान क्या है. Okay, test plan, that document contains the how we are going to test the application, okay, that is details, so entry criteria, exit criteria, okay, scope, objective, strategy, all the types of the testing, automation, manual, okay, environment requirement क्या है, schedule क्या रहेगा, roles and responsibilities सब लोगों की क्या रहेंगी, entry and exit criteria, everything, okay, that contains the test plan. ये और टारगेट्स भी दिए जाते हैं क्या डेली, कितने टेस्ट केसेस जो है या फिर एक टेस्ट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, कुछ टारगेट होता है क्या? टास्क दिए जाते हैं आपको, तो उस टाइम पे आपको जैसे टेस्ट केसेस लिखने के लिए बोलेंगे तो इसमें आपको लिखना है टेस्ट केसेस, और कभी छूट जाते हैं कुछ तो उसको नेक्स्ट इसमें कवर करते हैं. अब ये सेल्स और मार्केटिंग का जॉब नहीं है कि आपको इसमें इसमें कंप्लीट करना है, इतने क्लाइंट लाना ही है, ऐसा कुछ नहीं रहता इसमें, ओके, वी हैव टू कवर द ऑल द रिक्वायरमेंट. अब मान लीजिए कि आपको आपको ऐसा टास्क दिया है जो आप आज कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऐसे लिख के देना है कि आई हैव टुडे आई हैव वर्क ऑन दिस वन एंड आई completed the 80% of the work, remaining 20% work I will do the tomorrow, ठीक है. हम्म, तो ये आप सैटरडे संडे यूटिलाइज कर सकते हो.
So this is what contains in the test plan. So then test scenario. So test plan documentation is the documentation. So this is one of the test plan for the e-commerce site. Okay. So table of contents, scope, environment, okay, strategy, defect reporting procedure, roles and responsibility like this. Okay, we have to write, test lead is going to write what? Test plan, what is the scope, inclusions. Okay, we have to test this one. टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्या रहेगा हमारा, स्ट्रैटेजी क्या है टेस्टिंग की, डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोसीजर कैसे करेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द पर्सन ए हैविंग द टेस्ट मैनेजर. Okay, what is the responsibility for his C senior test engineer, okay, having the responsibility something test engineer, and they can add. Okay, schedule क्या रहेगा टेस्ट का, creating the test plan, कहाँ से कहाँ तक टाइम लगेगा, टेस्ट केसेस के प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम, ओके, एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ से कहाँ तक. Okay, that is what contains in the planning, test planning. Okay, how we are going to plan the document. Okay, planning the testing, कितने में कवर होना चाहिए, कितने दिन में कवर होना चाहिए, सब कुछ है. So that is what dynamic, it's not a static. If they are mentioned the 5 days but that is not covered in the 5 days, so it will take the 6 or 7 days. Okay, that may be, but we need to give the planning, that is very important. So that can be the reduce or increase, that is doesn't matter. So what are the test deliverables? Deliverables are the documentations. Okay, test plan deliverables are delivered to the client. Okay, so test plan we have to deliver to the client, so test lead will be delivered. Functional test cases, defect reports, summary report, these all are the deliverables. So the test plan contains the entire thing, what we are going to test the entire application, how we are going to test the entire application. Pricing, no. So sometimes it's available and this is optional. So entry and exit criteria, requirement analysis के लिए entry criteria क्या है? Once the testing team is receive the requirement documents or details for the project, detail about the project. So requirement analysis के लिए entry criteria क्या है कि requirement मिलनी चाहिए. Exit criteria हम पूरा list and requirement or explore understanding by the testing team and doubts are cleared. ओके, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हमको अंडरस्टैंड हो गई है और हमारे डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं. ओके, दिस इज व्हाट एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया फॉर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस. so every phase have the entry and exit criteria. Okay, टेस्ट केस डिजाइनिंग के लिए एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया. Okay, everything. So this is what a test plan. These are the contents in the test plan. And now the test scenarios. Okay, so we have to identify all the possible areas to be tested. Okay, what is the test scenario? How to, what to test. Test scenario means what to test. Okay, हमको क्या test करना है, that is known as a test scenario. So the interviewer can ask the question, that is what is the difference between the test cases and test scenario. Okay, so test scenarios, what to test, and test cases is how to test. So every we can derive the test cases from scenarios. Okay, the test scenarios are derived from यूजर यूज केसेस. ठीक है, तो ये कुछ सिनारियोस के ये है एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया. तो टेस्ट सिनारियो हमेशा हम टू वैलिडेट और टू वेरीफाई से स्टार्ट करते हैं, और टेस्ट केसेस भी हम वैसे स्टार्ट करते हैं टू वेरीफाई और टू वैलिडेट से. और टेस्ट केसेस एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है to check the functionality or requirement, whether it is working as per the client requirement or not. You can say that actual result and expected result both are same or not. So we are checking the functionality. Okay, working functionality, that is a test case.
And test scenarios, we are going to identify the all the scenarios, okay, or the possible areas, all the possibilities occurs. That is scenarios. Okay. Test cases means that is properties means so how to test that one. So आपको ऐसे कुछ भी एग्जांपल लाइव एग्जांपल दे सकते हैं. सो कैन यू टेल मी द सिनारियोज एंड कैन यू टेल मी द व्हाट आर द टेस्ट केसेस. ओके, ऐसे आपको कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं. ओके, सो लाइक अ टेबल, व्हाट विल बी द सिनारियोज फॉर द टेबल, और यू कैन से द चेयर. वी हैव द वन चेयर. सो जैसे एक चेयर है तो उसके लिए क्या सिनारियोज रह सकते हैं. सो सिनारियो मीन्स व्हाट टू टेस्ट. ठीक है, तो क्या क्या टेस्ट करेंगे आप चेयर के लिए. चेयर के लिए क्या टेस्ट करेंगे. What will be the different scenarios for the to test the chair. फर्स्ट कंफर्टेबल है या नहीं. Compatibility. Okay, then उसके बाद में सपोज उस व्हील्स वाली चेयर है तो फिर प्रॉपरली उसके व्हील्स जो है वो मूव हो रहे या नहीं okay, हो रहे. so इसको हम बोलेंगे मूवेबल है या नहीं है. ठीक है, मूवेबिलिटी हम चेक करेंगे. मूवेबल है तो व्हील वाली है क्या नहीं. ओके, वी आर आइडेंटिफाइंग द सिनेरियो फॉर द व्हील चेयर और नॉट. ओके, उसके बाद कंपेटिबिलिटी. में वो एडजस्टेबिलिटी जो एडजस्ट हो रहा है या नहीं प्रॉपर ओके, अप डाउन उसके बैक. बाद उसके बाद ये हो गए सिनारियोज. और क्या क्या सिनारियोज रह सकते हैं चेयर के लिए. ओके. वही एडजस्ट करने के लिए. ओके, सो वी कैन चेक द ब्रांड आल्सो. ठीक है, हाँ ब्रांड ब्रांड ऑफ द चेयर, देन कलर. कलर. हाँ. ओके, सो दीज आर द फीचर्स. सो फीचर्स आर द सिनारियोज. ठीक है, सो आइडेंटिफाई द कलर, आइडेंटिफाई द कंपेटिबिलिटी. ओके, कंपेटिबिलिटी है कि नहीं, कंफर्ट है कि नहीं. सो इन द कंपेटिबिलिटी वी कैन राइट द टेस्ट केसेस. सो हाउ इट इज़ कंफर्ट. ओके, सो जैसे हम बैठते हैं तो कंफर्ट है कि नहीं, तो हम अप एंड डाउन करते वो होते कि नहीं बराबर, वो फंक्शन वर्क कर रहे कि नहीं. ओके, सो दिस इज व्हाट सिनारियो. ओके, देन वी आर गोइंग टू राइट द टेस्ट केसेस. फॉर द इच सिनारियो वी आर राइटिंग द टेस्ट केस. कंपेटिबिलिटी कलर चेक करना है तो कलर के लिए हम मिनिमम एक सिनारियो के लिए मिनिमम 2 टेस्ट केसेस रहते हैं. ओके, एक है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव. सो कलर के लिए अगर हम चेक कर रहे टू वेरीफाई द कलर ऑफ चेयर, दिस इज सिनारियो. तो वी कैन राइट हियर to check whether the color have to check whether the chair have the blue color. Okay, then we are going to check the color. Okay, so the color is blue, so the test case is 5. So actual result is the test color is blue, and expected result is also the color is blue. Okay, so the test case is pass. Then check the negative test case. Okay, the color is not blue. Okay, the color is blue or not blue. So we can check that one. So negative test cases we can check here the very different color. Okay, the not blue means a different color. Okay, so that is negative test case. So is the color is different from the blue? No. Expected result is no. So test case is pass. ठीक है, अदर देन ब्लू नहीं है ना, नहीं है. सो दो हो गए टेस्ट केस. ओके, दिस इज लाइक टेस्ट सिनारियो एंड टेस्ट केसेस. ओके, व्हाट टू बी टेस्टेड. सो चेयर के बारे में आपने क्या क्या सिनेरियोज निकाले. कंपेटिबिलिटी, व्हील चेयर है कि नहीं. ओके, कलर निकाले, ब्रांड निकाले, ऐसे फंक्शन है उसका, मूवेबल है कि नहीं. ओके, लेफ्ट राइट होते कि नहीं, 360 डिग्री मूव होती कि नहीं, ऐसे बहुत सारे फीचर आर नथिंग बट द सिनेरियोज. हर एप्लीकेशन को सिनेरियोज रहते हैं. लॉगिन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स है. दीज आर द सिनेरियोज. ओके, बहुत सारे सिनेरियोज रह सकते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो यू कैन राइट द टेस्ट केसेस. सो एंट्री क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफाई द टेस्ट सिनेरियोज फॉर व्हाट. तो अगर हमको टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करने या फिर प्रिपेयर करने, उसके लिए हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए. सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए. टेस्ट प्लान. कैसा, अप्रूवल वाला.
Okay, if you have the approval test plan, then you can identify the test scenario. Approval SRS also. Okay, if any design document like UI, you can check that one. That contains the very useful information for us. Okay, that is use case diagram. ठीक है, test scenario templates is also required. ठीक है, for writing the test scenario we require a test scenario templates. ठीक है, you can write all the test scenario in the one Excel file. These are what test scenarios. Validate the register account functionality, validate the login functionality, validate the logout functionality. These are all are the test scenarios with having the priority. Okay, then we can write here the what will be the number of test cases we are going to write according to this one. Okay, these are the test scenario description. So this is a reference from FRS or SRS. Okay, you can write here and you can write the test scenarios. So this is what test scenario template is required. So everything will be given by the organization. Templates will be given by the organization. We have to enter the data. So what is the exit criteria? हम कब बोलेंगे कि टेस्ट सिनारियो हमारा कंप्लीट हो गया लिखना? जब हम सारे के सारे टेस्ट सिनारियो should be right. Okay, we wrote there and we reviewed and approval from the test lead. Okay, and we are going to check the RTM also, because the mapping the test scenario, again the requirement is check. Okay, so all the requirement is covered in the test scenario or not, that is very important. So how we can check that one? From the RTM. Okay, so from the RTM you can check all the requirement. So this is requirement means nothing but the test scenarios, that is covered or not. So we can say now the our all the requirement is covered according to RTM and FRS SRS. So we have completed writing the test scenario documentation, whatever are assigned to us. Okay, so it will be reviewed by the senior or test lead. Okay, once it is approved, ठीक है, तो सब लोग अलग अलग टेस्ट सिनारियो लिखते हैं. वो लॉगिन के लिए कुछ, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अलग लिख रहा है. ओके, सो उसको मर्ज कर लेते हैं सब कुछ. फिर जो आपने लिखा है आपका सीनियर उसको रिव्यू करेगा, जो सीनियर ने लिखा है उसका टेस्ट लीड या उसका सीनियर रिव्यू करेगा उसको. सो अब मान लीजिए कि अपना अप्रूवल हो गया है. ओके, टेस्ट सिनारियो टेम्पलेट हमारा डॉक्यूमेंट हमारा अप्रूव हो गया है. फिर हम क्या करते हैं? टेस्ट केसेस राइट करना चालू करते हैं. ओके, टेस्ट सिनारियो आइडेंटिफिकेशन. अप्रूव्ड एफआरएस नहीं लगता क्या इसको? मतलब एफआरएस डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा क्या टेस्ट सिनेरियो के लिए? एसआरएस और एफआरएस पहले बन के रहता है. सो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. सो आप एसआरएस रेफर करो या एफआरएस रेफर करो, दैट इज डजंट मैटर, बट एज पर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट दैट इज इम्पोर्टेंट. एफआरएस कब रिक्वायरमेंट है हमको? टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन, टेस्ट केस राइटिंग के लिए एफआरएस इम्पोर्टेंट है. एफआरएस में क्या रहता है? फंक्शनैलिटी चेक करेंगे ना हम. हाँ, फंक्शनैलिटी तो अभी हम फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं क्या? हम जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे सिनेरियोस क्या हो सकता है. और एफआरएस में एक्चुअल रहती है, एक टेक्स्ट फील्ड में क्या आना चाहिए, इस टेक्स्ट फील्ड में क्या होना चाहिए, वो रहता है. ओके, सो बेटर वे. सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाइड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. हाँ, इसीलिए पूछा मैंने क्योंकि एसआरएस तो डेवलपर्स रेफर करते हैं ना, तो फिर एसआरएस डेवलपर रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू डेवलप द एप्लीकेशन एज पर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. ओके, सो हम भी रेफर करते हैं उसको, कोई भी रेफर करता है, ऐसा कुछ नहीं है. सो वी कैन, जितने डॉक्यूमेंट हम रेफर करेंगे उतना अच्छा रहता है. ठीक है, एफआरएस रेफर करो, एसआरएस रेफर करो, एवरीथिंग. सो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए अप्रूवल होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट. जब भी हम टेस्ट सिनारियो लिखते हैं तो एटलीस्ट एसआरएस शुड भी अप्रूव्ड होना चाहिए. एफआरएस कब लिखते हैं? जब एसआरएस अप्रूव्ड होता है. ठीक है, तो एफआरएस पहले अप्रूव्ड होता है कि एसआरएस पहले अप्रूव्ड होता है?
होगा ना फिर वो तो कौन सा? सारे। हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि अप्रूव्ड एसआरएस, उसके बाद एफआरएस बनता है। सो अप्रूव्ड एसआरएस इज नेसेसरी। क्या एसआरएस अप्रूव्ड हो गया, इसका मतलब सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। अब सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो हम सिनारियोस लिख सकते हैं। दैट इज रिक्वायरमेंट। एफआरएस के अकॉर्डिंग हम टेस्ट केसेस चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद हम सिनारियो भी चेंज कर सकते हैं, तो एसआरएस में भी चेंजेस होंगे। ओके, तो अगर हमें डिफरेंस पहचानना है मतलब एसआरएस डॉक्यूमेंट और एफआरएस डॉक्यूमेंट्स में, तो कैसे पहचानेंगे हम? एफआरएस और एसआरएस में हम्म। लिख के रहता है, दिस इज एसआरएस, दिस इज एफआरएस। डॉक्यूमेंट का नाम ही लिख के रहता है। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है ना, उसमें सभी तो लिख के रहता है, ये एफआरएस है और ये एसआरएस है, ऐसा लिख के रहता है एफआरएस एसआरएस। देखो, पहला पेज ओपन करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ऐसे चैप्टर दिखेंगे उसमें, इसमें वर्जन लिखेंगे, ये देखो ये दिखेगा हर डॉक्यूमेंट पे। सब लिख के रहता है, वर्जन्स लिख के रहता है, कितने बार वो बना है, अपडेटेड वर्जन, अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, किसने बनाया, किसने रिव्यूड किया, सब कुछ रहता है। ये क्या है? हम्म। एस आर एस। ओके, ये वर्जन चल रहा है अभी, हम्म। सब कुछ रहता है, जो जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है वो वर्जन आते जाता है, यहाँ पे अपडेट होते रहता है। हम्म। ओके, सो द टेस्ट सिनारियो टेम्पलेट। ओके, देन एग्जिट क्राइटेरिया, अप्रूव होना चाहिए हमारा टेस्ट सिनारियो। ओके, रिव्यूड होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, सो once complete the test scenario, we can write the test cases. So this is what the template for the test scenario. Okay, requirement id मतलब test scenario id, requirement id। ओके, मेन फंक्शनलिटी क्या हो उसमें, सब फंक्शनलिटी, टेस्ट केसेस नेम, टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव, रेफरेंस आईडी। अब ये इम्पोर्टेंट उतने नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें जैसे रिक्वायरमेंट आईडी वगैरह या टेस्ट केस सिनारियो आईडी, दैट इज रिक्वायरमेंट। हर कंपनी का अलग अलग रहता है। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट शुड बी कवर्ड, ये जरूरी होता है। रिक्वायरमेंट कवर्ड होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज व्हाट टेस्ट सिनारियो टेम्पलेट। Okay, so here you can write test scenario, FRES, or you can check SRES. Okay, test scenario description, its priority, number of test cases. That is according to the organization, because template will be given by the organization. That is doesn't matter. Okay, so sometimes this is what template, and how we are going to write in this is test scenario template. This is test case ID, requirement, main functionalities, IMS, okay, home page, test case name, this one, verify the usability and the user interface of the home page. Okay, this is usability testing. Okay, so जैसा टेस्ट केस है वैसे टेस्टिंग हम बोलते हैं, यूजेबिलिटी, GUI टेस्टिंग, फंक्शनलिटी टेस्टिंग। Okay, so this is what test scenarios, and then we once we complete the test scenario, then you can write the test cases. Then once you complete the test cases writing, then you can execute the test cases. जैसे execute किए test cases, उसमें bug आ गए, हम report करते हैं। ठीक है, this is the entire process continue is going on। requirement change हो गई और test cases grow होंगे, test scenarios will be also grow। again we have to do the same thing। ठीक है, so this completely procedure will be happen in the organization। okay, so